Assalamualaikum dear students. Today we'll continue with our recapitulation work of chapter 6. So here is the next question, that is find the squares of the following numbers. You have to find out the square, and square means the same number will get multiplied 2 times. So 32 multiplied by 32, right? You will get the square. So if you will find it out by multiplying in that way, then you will not get full marks, or might be you will not get marks. You have to follow this method. So here a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. You have to follow this identity. Okay, so to follow this identity, your 32 must be in this format. Okay, means a plus b. So you will divide it in that way, 30 plus 2. Why are we doing in that way? Because it will be easier for you to find the square of 30, 60, 40, 50. Okay, so 30 plus 2. So we'll do it that way, 30 plus 2 whole square. Now here 30 represents a and 2 represents b. So whenever we'll see a, there we will put 30, and instead of b we will put 2. Okay, so let's do that. A square plus 2ab. So here instead of a only you will put 30. This square will remain as it is. Square, addition sign, everything will remain as it is. Only we have to replace this a and b. Okay, variables. So a is 30. So 30 square plus 2 will be as it is. Then a is 30 and b is 2 plus b square means 2 square. Okay, now just follow this and solve it. So first you will solve these brackets. So 30 square means 30 into 30. So 3 3s are 9 and 2 zeros plus 2 3s are 6 and 6 2s are 12 and 1 0. Now see here, between 2ab, here there is a multiplication. Okay, so we will multiply these 3 numbers. Plus sign will remain as it is. 2 square means 4. Now next is, you just have to follow this symbol. So here it is addition. So we will add all the given numbers. So 900 plus 120 plus 4, 4, 2 and 10. So your answer is 1024. So there will be the marks for each and every steps. Okay, so you must have to write this formula, this identity, and you have to follow the steps. Now next is, write a Pythagoras triplet whose one member is. Triplet means what? Triplet means the group of 3 numbers. So whose one member is means one member is given to you from 3 numbers. So this is the first, second and third. Now they have given you first one, that is 6. So here 6 is equal to 2m, means this is the first member given. Okay, you have to find out the next 2 members. So how can we do that? By using these formulas. So if we will be having the value of m, then we can find out the next 2 members. So how will we get the value of m? From this one, because here 6, 2m is equal to 6. Here 2 and 6 are known numbers and m is unknown. So in this equation only one number, or you can say one variable is there, means this is unknown one. Okay, and these 2 are known. So if they have given 2 known and 1 unknown, then you can find out the number easily. Okay, so by transposing this 2 on the RHS, you will get the value of m. So here 6 as it is, you are transposing 2, तो 6 जहाँ है वहीं पर रहेगा. आप 2 ट्रांसपोज कर रहे हो,
तो ट्रांसपोज करते वक्त अगर प्लस है तो वो माइनस में जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में, या न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में. सो हियर विल बी इन डिनोमिनेटर और इन यू कैन से डिवीज़न. Now divide it, you will get the value of m, that is 3. Now this is not your answer, still your answer is left. You just got the value of m. Now by putting the value of m here, m square, so 3 square minus 1. 3 square means 9 minus 1, so 8. You will get the next number. Similar way, m square plus 1 means 3 square plus 1. So 3 square is 9 plus 1, 10. So in this way you will find out the triplet. Understood? You just need to remember this one. Is that clear? By using the first member you have to find the value of m. This is the first step, and by putting the value of m in the next two you will get the value. Is that clear? Now next, what could be the possible ones digit ऑफ द स्क्वायर रूट, यानी ये जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट. यानी अगर मैं आपको 49 दूँ तो 49 के स्क्वायर रूट का डिजिट क्या आएगा? 7. उसका स्क्वायर रूट 7 है, 1 डिजिट ही है, राइट? सिमिलर वे इफ आई से स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 11 इज़ 121. यानी जब जब स्क्वायर का वंस का डिजिट 1 होगा तब तब उसके स्क्वायर रूट का भी पॉसिबल डिजिट वंस का डिजिट क्या होगा? 1. ओके. सिमिलर वे फॉर 4, अगर 4 है मीन्स आपके स्क्वायर के अंदर वंस की प्लेस पर 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का वंस की प्लेस का डिजिट क्या होगा? 2, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4. सिमिलर वे फॉर 5, 6 है तो उसका पॉसिबल क्या होगा? आइदर 4 और 6. वो कैसे? सी 4 का स्क्वायर क्या है? 16 और 6 का स्क्वायर क्या है? 36. यानी दोनों के स्क्वायर में वंस का डिजिट क्या आ रहा है आपके पास? 6. ओके. दोनों के स्क्वायर में वंस का डिजिट क्या आ रहा है? 6. यानी जब जब वंस की प्लेस पर स्क्वायर में 6 है तब तब उसके स्क्वायर रूट का पॉसिबल डिजिट क्या होगा? 6 या 4. इज दैट क्लियर? सिमिलर वे फॉर 9, यानी एक एग्जांपल 4 और 6 का ले लेते हैं. 14 का स्क्वायर क्या होगा? 256. 256 के 196. यस, 196, नॉट 256, राइट? और 4 का स्क्वायर क्या है? 16. यहाँ दोनों में वंस की प्लेस पर क्या है? 6. तो दोनों के स्क्वायर रूट का भी डिजिट वंस की प्लेस पर क्या है? 4. इसलिए जब जब वंस की प्लेस पर 6 होगा तो वो 6 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, और 9 है तो वो 3 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या है? 9 और 7 का स्क्वायर क्या है? 49. तो दोनों में वंस की प्लेस पर क्या है? 9. तो उसके स्क्वायर रूट का वंस की प्लेस का डिजिट क्या हो सकता है? 7 और 3. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो इफ हियर द डिजिट एट वंस प्लेस इज 1, इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट का भी डिजिट क्या होगा? 1. अगर स्क्वायर में 4 होगा तो स्क्वायर रूट का क्या आएगा? 2. 5 है तो 5, 6 है तो 6 या 4, 9 है तो 3 या 7. अंडरस्टूड? Let's move with the next question. Without doing any calculation, find the number which are surely not perfect square. Means you don't have to do any calculation to find it out. You just have to follow this rule that is the given number is a perfect square or not. So here we know that all perfect square number contain their units place digit 0. 0 means it should be even number of 0. Even 0, 1, 4, 5, 6 और 9. अगर इसके अलावा और कोई नंबर है, डिजिट है, then will not be perfect square. So 153, check it. Is it from this? No. Means 153
is not a perfect square, but 441, here the digit is 1, means it is a perfect square. And if you remember, 441 is a perfect square of 21. Okay, so by using this rule you can find out, and in exam if they are asking you, then you must have to write this rule. Okay, next, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Here they have specified the method that by repeated subtraction. Repeated subtraction means you have to subtract the numbers again and again till you will not get the 0. तो जिसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है? 100. तो हम 100 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले. सो 100 minus 1 99, देन आफ्टर 99 minus 3 96, then 96 minus 5 90 what 91. Likewise you will subtract it, और जो स्टेप्स में आपको 0 मिल जाए वहाँ स्टॉप हो जाना है. एंड फिर देन यू हैव टू काउंट द स्टेप्स दैट हाउ मैनी टाइम्स you have subtracted. So you will get, suppose 10 times you have subtracted, so you will get the answer of square root of 100, that is 10. Is that clear? Next, find the square root of the following number. Now here again new method, that is prime factorization method. Now what do you mean by prime factorization? Prime numbers means ऐसे numbers, the numbers which are having only 2 factors, one and number itself. So that number is known as prime number. And factorization, you have to do only prime factorizations, means only prime factors we want. So let's do that. 1764, we'll do first prime factorization of that. So how will we do that? For that, you must know the prime numbers. What are prime numbers? Prime numbers means having only 2 factor, यानी जो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा. 1 1s are 1, then 2 1s are 2, 1 2s are 2, ऐसे. So let's start with 1. Is 1 prime number? No. 1 is neither prime nor composite. Remember this. It is neither prime nor composite. Then 2. 2 कौन से टेबल में आएगा? 1 2s are 2 and 2 1s are 2. Means 2 is having only 2 factors, 1 and 2. So 1 and number itself. So 2 is your prime number. Similar with 3. 3 is your prime number. 4 is not prime number. It is composite number. Because 4 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा, यानी उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. ओके. 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है. प्राइम की कंडीशन क्या है कि मिनिमम ओनली 2 फैक्टर्स शुड बी देयर, राइट? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. और कंपोजिट की क्या है? मोर देन 2. बट 1 के फैक्टर्स क्या है? 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है, 1. ओके, सो दिस इज नाइदर प्राइम नॉर composite. So we have seen what are the prime numbers and composite numbers. Now let's begin with that. So first we have to take here prime number. Now how will you decide that which prime number you are going to take? Okay, so for this divisibility rules will help you. Here, what is the divisibility rule for 2? If the last digit or the digit at ones place or the digit at units place is even number, then the given number will be divisible by 2. Okay, so here it is even, so will be divisible by 2. So divide this number. 1764 divide by 2. 2 8s are 16. 7 minus 6 1, bring 6 down. 2 8s are 16. 4 down and 2 2s are 4. Here we got 0. It means that 1764 is divisible by 2. So here you can write down 882.
Now again you have to go with prime number only. So check this. Is it even number? Yes. So will be divisible by 2. So divide this by 2. 2 4s are 8. 2 4s are 8 and 2 1s are 2. Next. 441. Now is 1 divisible by 2 or is 1 even number? No, right? 1 is not even number, so we cannot start with 2. So now we have to check another prime number, that is 3. Okay, so what is the divisibility rule of 3? The sum of all the digit, यानी ये नंबर में जितने भी डिजिट है सबका सम करेंगे. 4 + 4 8, 8 + 1 9. अगर उनका सम 3 के टेबल में है या 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 3s are 9, 9 3 के टेबल में है, it means that 441 is also divisible by 3. So now the next prime number is 3. So 441 को 3 से डिवाइड करो. 3 1s are 3, 1 4 down, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 4 minus 2 2, 1 down, 3 7s are 21, right? So 147. Now again this is not the even number, means will not be possible with 2. So again we will check 1 + 4 5 and 5 + 7 12, right na? So check, is 12 there in the table of 3? Yes. 3 4s are 12, मतलब 147 भी 3 से divisible होगा. So 147 divide by 3. 3 4s are 12, 2 down, 7 down. So 3 9s are 27. It means that 3 49s are 147. Now again this is not the even number, so check for 3. 4 + 9 13. 13 3 के टेबल में आ रहा है? नो, मतलब 49 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. So now you have to check for another prime number. So what is the next prime number? Next is 5. तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? The digit at one's place must be 0 or 5. 10 will be divisible by 5. Okay, यानी ये 5 से भी divisible नहीं होगा. So now go to the next prime number, that is 7. So 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Here you have to stop. So understood that how to solve this? You have to check, you have to take help of divisibility rules, then this is very easy. So here we got all the prime factors of 1764. Now the next step is, we will write it in this way, 1764. We'll put it in square root because we want to find out its square root. Put all these square numbers, prime numbers, 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7. Now this is the perfect square, that's why these all are in a pair. Okay, so now to find out the square root, we'll make a group of them, and then this 2 is one time, because square root के बाहर हम लिख रहे हैं 2 2s are 4, तो 4 का square root क्या है? 2. Okay, so simply you have to write this 2 times, so 1 time, then 3 1 time, and 7 1 time. Okay, now multiply them. 2 3s are 6, 6 7s are 42. So 42 is a square root of 1764. Similar way you have to go with this. So how can you solve this sum? Once if you know the prime factors, prime numbers, what are the prime numbers, then you can find it out easily, as well as you should know the divisibility rules also. Is that clear? Let's move with the next one. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied, यानी जो नंबर दिया है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, so as
to get a perfect square. It means that the numbers which are given in the question are not the perfect square. You have to make it perfect square by multiplying with any number. तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कौन से नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, सो लेट्स डू दैट. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. यानी एक बार परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स डू दैट. 252 यानी 252 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. उसके लिए हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो सी हियर द डिजिट इज 2 मीन्स विल बी डिविजिबल बाय 2. सो 2 1s are 2, 5 2 के टेबल में नहीं है. सो 2 2s are 4, 5 minus 4 1. तो ये क्या होगा 2 6s are 12. If you can't do it directly here, then you can divide and you can check 252 divide by 2 ऐसे. Okay. Now again this 6 is even, so we'll continue with the prime number 2. So 2 6s are 12 and 2 3s are 6. Now see here, this is not the even number, so will not be divisible by 2. So now we'll go to another prime number, that is 3. So 6 plus 3 9. यानी 3 9 के टेबल में 9 3 के टेबल में है. It means that 63 is also divisible by 3. तो दूसरा प्राइम नंबर क्या लेंगे हम 3. 3 2s are 6 and 3 1s are 3. Now again 3 7s are 21. 7 itself is the prime number, so 7 1s are 7. So these are the prime factors of 252. 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Now I told that if it is a perfect square, then all the numbers will be in a pair. Okay? अगर ये perfect square होता तो सारे numbers pair में होते. तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर की पेयर नहीं फॉर्म हो रही है. यहाँ 2 की पेयर है, येस. 3 येस, बट 7 इट्स अलोन, राइट. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 252 बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. Understood? So let's multiply it. 252 multiplied by 7. 7 2s are 14. 1 up. 7 5s are 35 plus 1 36. 3 up. 7 2s are 14 plus 3 17. So this is your perfect square. तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आप अलग से फाइंड आउट करोगे प्राइम फैक्टर्स? नो, यही प्राइम फैक्टर्स इसके भी हैं, राइट. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज, ये जो भी नंबर्स है वो सारे आ जाएंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि हमने सिर्फ 7 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है टू मेक इट 1764. Okay, now 2 3 and 7. So 2 3s are 6, 6 7s are 42. So this is the square of 42. यानी जो नंबर की पेयर नहीं फॉर्म होगी वही नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. Is that clear? Now next, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. अब क्या करना है? डिवाइड करना है. सेम नंबर बट यू हैव टू डिवाइड. तो जो नंबर की फॉर्म पेयर फॉर्म नहीं होंगी हम वही नंबर से उसे डिवाइड कर देंगे. ओके, सो लेट्स डू दैट. 396. Similar way, first we'll find out the prime factors. Okay, so here it is even number, so 2 1s are 2, then 2 9s are 18 and 2 8s are 16. Again will be possible with 2. So 2 9s are 18, 2 9s are 18. हम 19 लेंगे, लेकिन 19 2 के टेबल में नहीं है, इसलिए हम 2 9s are 18 लेंगे. ओके,
Now this is not the even number, so now we'll go with the another prime number. So 9 plus 9, 18. Is 18 divisible by 3? Yes, 18 3 के टेबल में है, right? So 99 is also divisible by 3. Is that clear? So 3 3s are 9, 3 3s are 9. Now you know very well 3 11s are 33. 11 itself is a prime number, so 11 ones are 11. Now what are the factors? 2 into 2 into 3 into 3 into 11. These are the prime factors of 396. अब हमें ये चेक करना है कि टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, 396 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे. सो वी विल डिवाइड इट बाय 11 बिकॉज 11 इज नॉट फॉर्मिंग अ पेयर. सो 396 is divide by 11. 11 3s are 30, 3 6, bring 6 down, 11 6s are 66. So our perfect square number is 36. अब 36 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 6. अंडरस्टूड? यानी जो नंबर की पेयर फॉर्म नहीं होगी वही नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे. वी विल गेट द answer. So here it is over. Now in next video we will do the recapitulation of chapter 7. Thank you. Have a great day ahead.